सोरेन कीरकेगार्ड एक डैनिश फिलोसोफर था जिसका पहला पब्लिश्ड वर्क आइदर और appeared in 2 volumes in 1843. एंड क्योंकि कीरकेगार्ड लाइक्ड यूजिंग pseudonyms टू राइट अंडर, तो ये किताब उसने विक्टर हर्मिट या विक्टर एरेमीटा के pseudonym के अंडर लिखी. इसमें कीरकेगार्ड अपना एक एग्जिस्टेंशियल डायलेक्टिक प्रपोज करता है और उस डायलेक्टिक के पहले 2 मोड्स ऑफ बीइंग, एस्थेटिक एंड द एथिकल, को डिस्कस करता है इस किताब के अंदर. एंड ये किताब आप कह सकते हो, ये किताब आइदर और एक प्रीक्वल है टू अनदर वन ऑफ हिज वर्क्स, स्टेजेस ऑन लाइफ्स वे, जिसमें वो द रिलीजियस मोड ऑफ एग्जिस्टेंस विच इज़ द थर्ड ऑफ द एग्जिस्टेंशियल डायलेक्टिक, उसको एक्सप्लेन करता है. और ये किताब आइदर और यू कैन से इट सर्व्स द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग द रीडर्स ऑन टू द रिलीजियस डोमेन. एंड यू कैन से कि कीरकेगार्ड का जो अटमोस्ट पर्पस रहा है अपनी ऑथरशिप में, अपने कैरियर में, वही रहा है टू अट्रैक्ट हिज ऑडियंस ऑन टू द क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ, ऑन टू द रिलीजियस वे ऑफ लाइफ. सो इन अक्टूबर 1841 जब कीरकेगार्ड ने अपना डिसर्टेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी ख़त्म किया, तो ही लेफ्ट कोपेनहेगन एंड वेंट टू स्पेंड द विंटर इन बर्लिन. इस विज़िट का मेन पर्पस था टू अटेंड द लेक्चर्स बाय द जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक विल्हेम जोसेफ शेलिंग, हु वाज एन एमिनेंट फिगर एट द टाइम. कीरकेगार्ड इन लेक्चर्स के बारे में कहता है कि दे वर एन अनबेरेबल नॉनसेंस, एंड विद इन द ऑडियंस, अमंग द ऑडियंस वाज फ्रेडरिक एंगल्स एज वेल. इस स्टे में, इस बर्लिन के स्टे में कीरकेगार्ड ने अपनी इस किताब आइदर और की मैन्युस्क्रिप्ट पे काम किया. ही टुक डेली लेसन्स टू परफेक्ट हिज जर्मन एज वेल, और उसने काफ़ी ओपेराज और प्लेज पे अटेंड किए. एंड ही रिटर्न टू कोपेनहेगन इन मार्च 1842 विद अ ड्राफ्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर दिस बुक. और उसने फिर 1843 की फरवरी में ये किताब पब्लिश की. अब ये किताब आइदर और ये 2 लाइफ व्यूज़ पोर्ट्रे करती है. ईच लाइफ व्यू जो है, इट इज़ रिटन एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ फिक्शनल pseudonymous ऑथर, एंड द प्रोज, द राइटिंग्स रिफ्लेक्ट एंड डिपेंड ऑन द लाइफ व्यू बीइंग डिस्कस्ड. फॉर एग्जांपल जो एस्थेटिक लाइफ व्यू है वो एक इमीडिएसी के साथ लिखा हुआ है, और ये सिर्फ शॉर्ट एसे फॉर्म की राइटिंग्स हैं, शॉर्ट फॉर्म राइटिंग्स हैं विद पोइटिक इमेजरी एंड एल्यूजन्स, और ये एस्थेटिक टॉपिक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, सच एज म्यूज़िक, सिडक्शन, ड्रामा, ब्यूटी. वाइल जो एथिकल लाइफ व्यू है, इट इज़ रिटन एज 2 लॉन्ग लेटर्स, और ये ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है, ज़्यादा रिस्ट्रेंड प्रोज के साथ लिखे गए हैं, डिस्कसिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, मैरिज वगैरह. ये जो किताब है इसकी व्यूज़ नीटली समराइज नहीं है. दीज आर रिटन एज इफ एक्सपीरियंस्ड by the author in the immediate now, not trying to convince another person, not trying to be argumentative, but as lived experiences of the author. जो aesthetic है वो एक personal subjective realm of existence है, जहाँ पे जो individual है, जो individual aesthetic individual है, he's trying to extract every kind of pleasure from life only for their own sake. इस realm में this person has the possibility of the highest as well as the lowest, while on the ethical realm, ये एक civic realm है जहाँ पे एक इंसान की, एक ethical इंसान की value और identity is judged and at times is superseded by the objective world. So in a sense the subjective is thwarted by the objective. तो in a sense कीरकेगार्ड इस किताब में 2 लाइफ व्यूज़ पेश करता है. पहले 2 मोड्स ऑफ बीइंग पेश करता है आउट ऑफ द एग्जिस्टेंशियल डायलेक्टिक, और वो आपको कह रहा है कि चूज़ वन ऑफ दीज 2. वट एवर चॉइस यू मेक, यू नो वट विल फॉलो. You get that from the book. You see what kind of a life the aesthetic individual lives and what kind of a life the ethical individual lives. So if you make the aesthetic choice, you'll know where you end up. And if you make the ethical choice, तो आपको उसका भी पता है कि what kind of life does the ethical realm entail. There is no in between. कीरकेगार्ड एक synthesis को involve करता है नहीं है. He is very against that Hegelian framework. ये एक थीसिस होता है, एक एंटीथेसिस होता है, और उसके बीच में से उनकी रिकन्सिलिएशन में से एक सिंथेसिस निकलता है. इट डजंट गो फॉर ऑल ऑफ दैट. ही सेज इसके बीच में एक थर्ड रिकन्सिलरी ऑप्शन नहीं है कोई भी, सिर्फ आइदर है या और है. सिर्फ ये 2 लाइव्स हैं, at least as far as this work alone is concerned. We know in another one of his books, Stages on Life's Way, कि there is the religious realm as well, जो इन दोनों को सुपरसीड करता है. लेकिन as far as this book is concerned, he gives us 2 choices only. He gives us the either, which is the aesthetic, and he gives us the or, which is the ethical.
जो पार्ट 1 है इस किताब का, डील्स entirely with the either, with the aesthetic, which we'll discuss in this video. And the next we'll discuss the or, the second part, which is the ethical realm. तो इस किताब की प्रीफेस में विक्टर एरेमीटा, विक्टर हेरमिट, जो स्यूडोनिम है जो कीरकेगार्ड ने चूज़ किया टू राइट अंडर, वो हमें बताता है कि ये राइटिंग्स उसकी पोजेशन में कैसे आई. ही टेल्स अस कि ही वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट एक दिन और उसने एक राइटिंग डेस्क देखा एक सेकंड हैंड शॉप के अंदर, और वो उस विंडो के बाहर से काफ़ी दफ़ा गुजरा है और उसको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील होती है जब भी वो गुजरता है उस विंडो के बाहर से, उस शॉप के बाहर से, to just buy that writing desk. He does not have a particular need for it, लेकिन उसको बस एक desire है just to attain that, just to have that in his possession. तो one day he just goes into the shop, he gets that writing desk, और जब उसको वो घर लेके आता है तो he cannot open its drawer, तो वो एक हैमर लाता है, हैमर से उस ड्रॉर को टैग करता है basically, and he somehow opens up a secret chamber. I'm not sure if chamber is the right word. You can just say a secret drawer in the writing desk. इस secret drawer के अंदर से उसको कुछ papers मिलते हैं, कुछ writings मिलती हैं, और ये writings हैं the content of this book, right? ये writings हैं of two individuals, A and B, the aesthetic man and the ethical man. He does not give us a name. He does not give us the details of who these people are. A का तो हमें नाम भी नहीं वो बताता, but B का he tells us his name is William or Wilhelm, and William is a judge. We'll continue with the ethical individual in the next video, but we'll talk about only the aesthetic individual here. Either or की का जब आप analyze करते हो, you understand what Kierkegaard means by the aesthetic way of life. He claims that the aesthetic way of life is the existence sphere of the ordinary man in his immediacy. अभी जो वर्ड immediacy है, ये एक टर्म है जो आप कह सकते हो कीरकेगार्ड ने अडॉप्ट किया फ्रॉम द हेगेलियन सिस्टम, फ्रॉम द हेगेलियंस, लेकिन इट वुड बी पॉइंटलेस टू परस्यू द टेक्निकल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इन हेगल सिस्टम, बट वी नीड टू गेट द जनरल सेंस ऑफ द वर्ड as Kierkegaard uses it, at least. When Kierkegaard uses the word immediacy, he means by immediate experience, direct experience, experience as it is simply given, experience as it is simply had before the onset of reflection. Sensation और feeling जो है वो immediate है as opposed to thought. जो first thoughts होते हैं वो ज़्यादा immediate होते हैं as opposed to second guesses. So you can say immediate experience is experiencing life as it is before it doubles back on itself in the mediation of self-consciousness. So you can say एक इंसान की immediacy is what he is by nature, what he is before reflection, what he is in the immediate now. Aesthetic से मुराद जो है, as far as Kierkegaard is concerned, it does not simply mean pertaining to beauty and the fine arts. Kierkegaard का जो मतलब है, it retains its etymological sense of aesthesis or sense perception. The aesthetic in a man is that by which he immediately is what he is. But the problem with immediacy is कि it is never where it is asked about. If you're wondering, अगर आप सोच रहे हो whether you're living in the immediate experience, so you've already removed yourself from immediate experience, because thought only comes after sensation. So if you're wondering about it, you're already removed from immediacy. So essentially Kierkegaard ये कह रहा है कि जो aesthetic man है उसके लिए immediacy is his prime concern, sensation is his prime concern, pleasure and the attainment of pleasure is his prime concern. जो A है, जो character है, aesthetic man है, in the either, he is such a man. He is a representative of the aesthetic personality. Part 1 aesthetic part के काफ़ी sections हैं. इसमें एक part है named the immediate stages of the erotic or the musical erotic. इसमें एक section है by the name of Dipslemata. There is a section on crop rotation. There is a section called the seducer's diary. We'll go through very briefly all of these sections, while retaining the overall purpose that Kierkegaard had while writing the book. अब ये A जो है, ये जो aesthetic character है, ये एक admirer है of Mozart's Don Juan.
ये हमें पता चलता है in the section called the immediate stages of the erotic or the musical erotic. When I was reading this section, I could not grasp what Kierkegaard had in mind with the book, क्योंकि जब आप ये section start करते हो तो you just see कि Kierkegaard मोजार्ट के डॉन जियोवानी जो ऑपरा है उसको एनालाइज कर रहा है, बड़े साइंटिफिक मेथड से वो उसको एनालाइज करता है. एंड यू डू नॉट सी दैट ऑफ्टन, क्योंकि एक म्यूजिकल पीस जो होता है, एक ऑपरा होता है, इट इज़ meant to be enjoyed, right? It is meant to be experienced in the immediacy. It is not to be analyzed like Kierkegaard analyzes Don Giovanni. Kierkegaard somehow अपने इस section में prove कर देता है कि मोजार्ट का ये ऑपरा इज़ एन इमॉर्टल ऑपरा. इट इज़ द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल पीस ऑफ आर्ट. एंड यू सी दैट ही इज़ आर्ग्यूइंग दैट मोजार्ट्स piece Don Giovanni is the greatest music piece out there. इसका intention that he had in mind, you can say, is to show कि जो aesthetic man है, he has this musical erotic का element inside of him. And this is only one of you can say the many passions, the many sources of pleasures. जैसे म्यूज़िक इज़, यू डिराइव प्लेजर फ्रॉम म्यूज़िक, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग यू डिराइव प्लेजर आउट ऑफ. तो ये आपको कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है बाय द प्ले इट सेल्फ, बाय द ओपेरा इट सेल्फ. क्योंकि डॉन जुआन, द कैरेक्टर हेयर इन मोजार्ट्स डॉन जियोवानी, his sensuality is pure undifferentiated desire. He craves woman without discrimination of age or beauty. He craves woman, but not only one woman, because you can say he's a worshipper of pleasure, and he worships pleasure in all of its forms. So this person, the aesthetic person, worships pleasure in all of its forms. Music, you can say seduction and food and all sorts of cravings. He worships that through you can say undifferentiated desire. You see in this section के जो writer है A, the aesthetic man, ये एडमायर कर रहा है काफ़ी ज़्यादा डॉन जुआन को, एंड स्पेसिफिकली मोजार्ट्स पीस, मोजार्ट्स ऑपेरा डॉन जियोवानी. एंड दैट इज़ बिकॉज द इमीडिएसी दैट ही सीज इन दिस ऑपेरा एंड बाय दिस कैरेक्टर डॉन, ही हिमसेल्फ possesses दैट, बट टू अ लेसर डिग्री. उसकी नज़र में डॉन एक प्योर टाइप, एक प्योर यू कैन से एम्बॉडीमेंट है ऑफ प्योर इमीडिएसी. और ये जो ऑपेरा है डॉन जियोवानी, it is a pure representation of a pure type of pure immediacy. So he is kind of setting that as his ideal. He's fantasizing about reaching that level of pleasure himself. He mentions 1003 mistresses in Spain. So it is not what is true of reality, but what could be true of reality. So he's constantly idealizing the character of Don. He's obsessing over it, and you can clearly see that he's in the same realm of aestheticism. Aesthetic के दो divisions बयान करता है character, the sensual and the reflective. जो sensual है वो most basic one है, क्योंकि it is most natural. It is what comes naturally to all beings. जो डॉन जुआन का कैरेक्टर है मोजार्ट के डॉन जियोवानी में से, he is an example high in the sensual division. He's high in his immediacy, and that is what comes naturally to him. Uski immediacy mein he's only looking after sensation. He's not thinking about this looking after sensation. He's only stuck in that immediate experience wala realm. But what comes after that is the reflective phase of the aesthetic, which is when you think to yourself, acha, this has given me pleasure so far. अब मैं इससे आगे किस चीज़ को अपना आइडियल बनाऊँ, किस चीज़ को लुक फॉरवर्ड करूँ, सो दैट थिंग अगेन कैन गिव मी मोर प्लेजर. सो you're reflecting over pleasure itself. You're detached from your immediate experience, and now you're in the reflective experience. You're thinking about what could give you the most pleasure, which is why you're in the second division of the aesthetic now. What is common of A and Don Juan is that both of them are unmediated by ethical considerations. Plus, A की नज़र में there is no such thing as guilt. All guilt in his eyes is false guilt. So if you're in guilt, A would probably say you're a foolish man.
because conscience has no normative significance to him. It is to be accounted for simply in terms of, आप कह सकते हो, psychological, sociological mechanisms. Another thing to be noted here is that if you're reading his writings, you'll see that not everything that is beautiful is interesting to him or of interest to him, but that everything that is interesting to him is beautiful to him. So it is this interesting wala element which he wants to preserve at all times. His aesthetic life is lived in pursuit of the interesting. और ये boredom है जिसको वो reject करता है at all times. It is boredom which he wants to run away from at all times. He says, since boredom advances and the boredom is the root of all evil, no wonder then that the world goes backwards, that all evil spreads. This can be traced back to the very beginning of the world. The gods were bored, therefore they created human beings. Adam was bored because he was alone, therefore Eve was created. Since that moment, boredom entered the world and grew in quantity in exact proportion to the growth of population. Adam was bored alone, then Adam and Eve were bored and family. After that, the population of the world increased and the nations were bored en masse. इस किताब का एक और सेक्शन है, पार्ट 1 का एक और सेक्शन है बाय द नेम ऑफ क्रॉप रोटेशन, और इसमें ए जो है वो एक स्ट्रेटजी आउटलाइन करता है जिससे वो बोर्डम को वार्ड ऑफ कर सकता है, जिससे वो बोर्डम को अपोज कर सकता है. इट इज़ अ वे जिसके थ्रू वो सेम प्लेजर्स या सेम काइंड्स ऑफ प्लेजर्स को बार बार अटेन कर सकता है. इट कैन बी अ वे टू अवॉइड गेटिंग फेड अप ऑफ द सेम प्लेजर्स. अब इस क्रॉप रोटेशन के करेक्ट और इनकरेक्ट वेज हैं. ही सेज कि एक इंटेंसिव वे है और एक एक्सटेंसिव वे है. एक एक्सटेंसिव चेंज है वेयर बाय, फॉर एग्जांपल, इफ़ you're bored, you travel abroad, you change the scenery, but that will bring on boredom later on as well. You will not be able to run away from boredom forever. But intensive change जो है, it will promise you things of interest. It will promise you refuge from boredom. वो कहता है, the more inventive one can be in changing the mode of cultivation, the better. But every particular change comes under the general rule of the relation between remembering and forgetting. The whole of life moves in these two currents, so it is essential to have control over them. Remembering and forgetting के through, इन दो principles के through, he can have what he requires to combat boredom. वो अपनी interpretation of specific events और experiences को change करके he can ward off boredom. He can remember his past selectively in a poetic sense, such that वो सिर्फ specific experience को recall कर रहा है, अपने दिमाग में remember कर रहा है in a way कि he only recalls the most interesting of events and experiences, and he can selectively forget several aspects of his life as well. If he's living in the immediate now, he can forget specific uninteresting things so that whatever remains is interesting to him. इस forgetting के element में specifically he says कि उन चीज़ों को avoid करना है which bring on commitments that you cannot fulfill, commitments that would not be interesting to be fulfilled, such as friendships, relationships, marriage, vocation. These things bring about commitments which are too uninteresting to be fulfilled in his eyes. So he says कि it is by forgetting these obligations that you can worship the interesting and the aesthetic completely. ये जो कुछ principles ए बयान कर रहा है इस सेक्शन में, द क्रॉप रोटेशन वाले सेक्शन में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आती है अगले सेक्शन में जिसका नाम है द सेड्यूसर्स डायरी. अब ये जो डायरी है, ए कहता है कि उसने ये डायरी नहीं लिखी, ये डायरी किसी और इंडिविजुअल बाय द नेम ऑफ जोहानस द सेड्यूसर ने लिखी है. एनीवे, इस डायरी में नंदलेस आपको नज़र आता है कि द सेम प्रिंसिपल्स आर implemented, the principles that he outlines in the crop rotation वाला section. ये जो राइटर है इस सेक्शन का, द सेड्यूसर्स डायरी का जो राइटर है जोहानस द सेड्यूसर, वो अपनी कहानी बताता है थ्रू लेटर्स and letters that he has written to a specific lady called Cordelia and letters that she has written to him. ये जोहानस जो है, it is
an aesthetic individual himself. He's constantly running away from boredom and from the uninteresting towards the interesting and the non-boring things. He's for first running towards a lady, towards seducing a woman by the name of Cordelia, not so much for love but for the aesthetic fun of abandoning her later on. वो उसको stalk करता है. He takes great pleasure planning the seduction itself. Ultimately they later on get engaged, but as soon as she deeply confesses her own love for him, वो calculate करता है बड़ा मैकियावेलियन तरीके में, और वो later उसको manipulate करता है Cordelia को. He gives his account of multiple women that he's been with in his life, and he implements those same principles that have been outlined in the crop rotation, such as he's only in it for the sense perceptions, the pleasures derived from sense perceptions, and he's in it as long as those relationships, those commitments are fulfilling for him and interesting for him. ये सेक्शन जो है टाइटल्ड द सेड्यूसर्स डायरी, ये एक तकरीबन आई थिंक सो 120-130 पेजेस का है, और इसमें मकसद एक ही चीज़ है जो है बयान करना हाउ द एस्थेटिक इंडिविजुअल, इन पर्टिकुलर द रिफ्लेक्सिव एस्थेटिक इंडिविजुअल ट्राइज टू मैक्सिमाइज दिस प्लेजर, और वो किस तरह बोर्डम से बार बार भागता है बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन द क्रॉप रोटेशन वाला सेक्शन. सो दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ the part 1, which is the part that deals with the aesthetic individual, and later on you see towards the end how no matter how much he tries, no matter how much he manipulates Cordelia and other women, he does not attain to that unlasting interest, to that unlasting contentment or happiness. That is what you can say Kierkegaard का मकसद था in outlining the aesthetic life for you in an immediate sense, in an indirect experience wala sense, to make it clear how this life is not worth living, how this is ultimately unfulfilling. Ethical wale section mein he does the same, and in the sequel of this book, you can say Stages on Life's Way ke andar, he attracts you towards the religious life, towards the Christian way of life, which is in his view the life that deserves to be lived, which is ultimately fulfilling. So this was it for the part 1 aesthetic part. We'll talk about the ethical part in the next video.